Sorry ass DJ. हेलो गाइस, दिस इज़ विक्रम और आज की वीडियो में JBL के काउंटर पे आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ मैं। एग्जीबिशन हुआ है, आप लोग जानते ही हैं। इस बार हरमन ने भी अपना काउंटर बहुत ही शानदार लगाया था। हरमन मतलब एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जिसमें JBL, साउंडक्राफ्ट, AKG और बहुत सारे और भी ब्रांड्स होते हैं। इन ब्रांड्स को हम लोग क्वालिटी के नाम से जानते हैं। तो आज इन ब्रांड्स के कई सारे प्रोडक्ट आपको मैं दिखाऊंगा, जो कि हमने एग्जीबिशन में वीडियो लिया है, वो आपके लिए लाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये विकी वैन का वीडियो है तो स्पेशल होना बनता है। इसमें आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट चूज करके लाया हूं, जो आप होम डीजे, मिनी डीजे और ट्रॉली स्पीकर्स टाइप के कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पे देख सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन कंपनी के खुद साउंड इंजीनियर आपको बताने वाले हैं। मैं उनसे सवाल पूछूंगा, वो लोग आंसर देंगे और बातचीत बनी रहेगी। आप लोग इसे देखिए, इनकी बातचीत को सुनिए। एक्चुअली इसमें दो चीज़ें दिखाई आएंगी। एक तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बहुत परफेक्टली मिला है हमें, और दूसरा इन लोगों के एक्सप्लेन करने का तरीका। मतलब मैं तो खुद सुन के दंग रह गया, ये इतना प्रॉपरली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे। चलिए, तो आज हम लोग दो गेस्ट से मिल रहे हैं हमारे, जो कि कंपनी के साउंड इंजीनियर्स हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर विकी वैन के ऑफिस नंबर पे कॉल करके आप हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है और यहाँ आके आप लोग इसका डेमो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हरमन ग्रुप के काउंटर पे विजिट करने वाले हैं। हरमन एक ऐसा कंपनीज का ग्रुप है जिसमें बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, जिनमें AKG, AMX, क्राउन, BSS, JBL, साउंडक्राफ्ट, DBX, मार्टिन, ये बहुत सारे ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं। इन सब ब्रांड्स के अपने कैलिबर है काम करने के, अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हर कोई अपना प्रोडक्ट बनाता है। AKG अपने हेडफोन्स, माइक्रोफोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके हेडफोन्स की कुछ रेंज यहाँ से आप लोग देख ही सकते हैं। JBL जो कि अपने नाम से फेमस है स्पीकर्स में और एक्टिव लाइन एरे, सबवूफर्स, इनमें JBL का काफ़ी बड़ा योगदान है। एक्चुअली हम लोग इनको एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि ये किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट अगर आपको कोई बताने वाला है तो उसे बताते हैं कि ये JBL जैसा बजता है। मतलब इनका स्टैंडर्ड इतना हाई है। मिक्सर्स में साउंडक्राफ्ट, जिसमें से ये एक आप डिजिटल मिक्सर देख रहे हैं, ये मॉडल है VI3000। इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं। इसके फेडर्स की साइज़ देखिए, मतलब इतने बड़े फेडर्स, और सारा कंसोल जो है डिजिटली ऑपरेट होता है। बैक साइड में कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट के सॉकेट्स दे रखे हैं कंपनी ने। पावर सप्लाई पे फैन भी लगा दिया है, और इसमें एक SI इम्पैक्ट मॉडल भी आता है साउंडक्राफ्ट में। ये एक वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट मिक्सर डिजिटल में मैं बोलूँ तो। और अगर आप लोग कॉम्पैक्ट में जाना चाहते हैं तो UI24R, जिसको आप अपने टैब से ऑपरेट कर सकते हैं। टैब के साथ वाईफाई से कुछ इयॉन के नए मॉडल्स आए हैं, जिनके बारे में आगे कंपनी के इंजीनियर आपको बताएंगे। और ये है मेरा वन ऑफ दी फेवरेट मिक्सर, सिग्नेचर 22MTK मल्टी ट्रैक। बहुत इजी, बहुत ही कन्वीनियंट। कुछ सबवूफर्स भी JBL ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ मॉनिटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। हालांकि मैं आपको सभी के बारे में नॉलेज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैंने कंपनी के इंजीनियर से बात की है। वो खुद उन्हें प्रेजेंट करने के लिए हमारे
इस वीडियो में हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। और मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा हरमन ग्रुप के पूरे रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और जिन्होंने इतना हेल्पफुली मुझे ये सारा वीडियो कंडक्ट करने में हेल्प करी। ये AKG के कुछ माइक्रोफोन्स हैं जो कि स्टूडियो लेवल के हैं। ये एक कॉम्पैक्ट सा सिस्टम है JBL का नया आया हुआ, जो कि होम ऑडियो के लिए बनाया है कंपनी ने। पहली बार हमारी लाइन से JBL पोर्टेबल सिस्टम में आ रही हैं, मतलब एम्पलीफायर्स और स्पीकर्स का अलग सा कॉम्बिनेशन। कुछ छोटे पोर्टेबल एक्टिव स्पीकर्स भी कंपनी की तरफ से अभी आने में है, जिनका लॉन्च होना बाकी है, लेकिन इन्होंने अभी इसका डेमो देना स्टार्ट कर दिया है। XTI सीरीज एम्पलीफायर और iTech सीरीज के एम्पलीफायर क्राउन की ओर से 6002 और SD 12000। ये एक छोटे लेवल का एम्पलीफायर है जो XLI 800 है। अराउंड 325 वॉट्स देता है ये 4 ohms पे पर चैनल। कुछ सीलिंग स्पीकर्स, ड्राइव रैक, जिससे आप वेल अवेयर हैं। मार्केट की डिमांड देख के सभी कंपनियों जैसे JBL ने भी अपना एक वायरलेस माइक्रोफोन, जो कि इकोनॉमिक रेंज में है, निकाल दिया है। ये आपको मोबाइल फ़ोन और एम्पलीफायर कनेक्टिविटी दोनों देगा। ड्राइव रैक P82 जो कि सामने आप देख रहे हैं। कुछ ऑडियो सिस्टम्स है जो कि छोटे और पोर्टेबल दिए हुए हैं, जिसमें JBL के स्पीकर्स और AKG के माइक्रोफोन्स हैं। स्पीकर्स एक्टिव हैं, इनको आपको सिर्फ पावर देना होता है, लाइट सोर्स देना होता है। ये नए मिक्सर्स हैं, नैनो M08BT 8 चैनल में, और इसमें और भी छोटे मिक्सर्स कंपनी ने यहाँ पे अवेलेबल कर रखे हैं। लाइटिंग सेक्शन भी लगाया था, लाइटिंग सेक्शन मुझे बेटर होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। ये है वो लाइनर है और सब ऊपर, जिसके बारे में मैं आगे आपको इंजीनियर से बात करके बताने वाला हूं। मतलब इस बार कंपनी ने काफी ज्यादा स्टडी करके इन प्रोडक्ट्स को लाया है। सो गाइज, बेसिकली अगर आप लोग होम के लिए डीजे बनाना चाहते हैं तो JBL ने आपकी प्रॉब्लम का एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन निकाला है इन द नेम ऑफ बियॉन्ड 3। Okay. My name is Nathan. Okay. So tell me something about this product, JBL. Okay, this is the JBL Beyond 3. This is our new integrated amplifier. It's designed for karaoke. It's got a number of really interesting features. It has a number of DSP settings built into it. So there's PEQ for microphone, for effects, for the music input as well. It can do echo and reverb, so it's all very nice for the for your karaoke. A package for home. Yeah, so it's a really good package for home. It's also really great for commercial, for small installs. If you're doing, if you have like a small restaurant, a small bar, or but it's great for home as well. What is the power output? The output of the the Beyond 3 is 360 watts over 2 channels. So both channels have 360 watts. And then on the, At 4 ohms. at 8 ohms. 8 ohms. Okay. At 4 ohms, it's 460 watts per channel. So we can put the subwoofer on one channel and satellite speakers on other. The subwoofer is self-powered, so it's active. Okay. So you would put one of these speakers on each channel. So this is sold as a pair. Okay. And this is the Passion 10. Yeah. So this will connect to this amplifier. Yep. This will only run the satellite speakers. Yes, this runs the satellite speakers, but you can also do Bluetooth with it. It has a USB stick input on the front. Yeah. And on the back, it has 2 HDMI inputs. So on the back here, you have 2 HDMI inputs, 1 HDMI output with ARCS. Okay. So it can take the signal back from the television and put it back through your speakers as well. It has an optical input. And right here you have a PC interface, Yeah. and basically what you can do is you can do all of your PEQ filters on your laptop.
So it makes it very simple to set it up, very easy to control, and then if you want to reset your presets, you can always just go into the laptop, set it up, program it, load them back in, and you're off and running. And what about the power supply? Is it SMPS or what? Power supply it's a Class D amplifier. Okay, so basically it's SMPS, not transformer based. It does have a transformer in it, so it has a switch mode power supply. Okay. And that just works internally, but it's all done up. It meets all the relevant standards for EMC and anything that you might have a concern. And this all gets thoroughly tested. This is all built and tested in our factory and with our workshops and our engineers. So. Does it come under warranty? It does come with a standard warranty here in India. I have to ask about what that warranty is. 1 year or something. Yeah, it should be 1 year. I believe you can get an extended warranty, but that's from the India team. So how is the product? Is it reliable? It's very reliable. As it goes with JBL branding. Yes. This is very reliable. We've had it out in Southeast Asia for about a year now, and we've had very few calls on warranty or service and repair, but it's very reliable, and we always stand behind our products. So if there's a problem, we're always happy to fix it. Hope sometimes we get a demo of this. Yeah. So it has 2 microphone input. It has 3, so it has 2 on the front and 1 on the back. Okay. आज का दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारा वो ट्रॉली स्पीकर मान के चलते हैं। इसमें एक सब ऊपर है और ऊपर से एक छोटा सा लाइनर टाइप का पैटर्न दिया गया है जो कि डिटैचेबल है। मेरे बोलने से बेटर है कंपनी के इंजीनियर बोलेंगे, आप लोग वो सुनिए। So this is basically the detachable model. Yes, exactly. So what we have here is the Eon 1 Mark II. So this is a modular, portable, all-in-one system. So at the bottom we have a powered subwoofer that is carrying the whole system with an inbuilt mixer. Okay. This is also battery powered, so you can run this for many hours by itself without the need for any AC power. It has inbuilt battery. Inbuilt battery. Okay. You want to hold this here? Yeah. This middle section in the column is actually where the battery is hosted. So when I pull this out, Okay. I can actually quickly replace the battery by replacing one of the. You can buy the optional additional battery columns. Okay. So this is the power bank of this system. Exactly, which is very flexible. So we could literally go in the middle of a rice field, anywhere on a beach, plug in some instruments, plug in a microphone and do a show. Yeah. Nothing else required, right? If you want more backup, so buy this Buy only. an extra one and a charger, Yeah. and you can have some backups Okay. in the store. So this is a there's a 10-inch subwoofer at the bottom. So this is effectively a portable line array system, right? So it's got a very far throw, it's got very high SPL output, and yeah, it's extremely portable. Multiple inputs on the back. So on the back here, we have a mixer inbuilt with 3 XLR inputs, some line inputs. You also have a Bluetooth, so you can have a Bluetooth backing track and live instruments over it. Yeah. So like I say, portable for live music, for corporate events, yoga studios, music studios. So आई थिंक आप लोगों को प्रोडक्ट जितना रोडनी ने समझाया है उतना अच्छे से समझ गया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए। मैं अगली कंटेंट पे पहुंचता हूं। चलिए मिलते हैं आगे। तीसरा प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। इसमें लाइन एरे सबवूफर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया था जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का है। इसमें एम्पलीफायर इनबिल्ट था, यानी कि सारे सिस्टम एक्टिव बने हुए थे, क्लास डी के एम्पलीफायर थे और प्रीसेट्स ऑलरेडी एडेड थे इन सब चीज़ों के, जिससे कि आपको जस्ट प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम मिल रहा था। आपको जस्ट आउटडोर में लाइनर लेके जानी है, लाइट का कनेक्शन देना है, मिक्सर का देना है और यू आर रेडी टू गो। डिटेल में कंपनी के इंजीनियर बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, ये देखते हैं। So, from JBL Professional? Yeah, from JBL Professional. Okay. So, what is this product called? So this is the brand new SRX 900 range from JBL Professional. Okay. This is a self-powered line array solution. So we have 2 sizes of the line array: the Yeah. 6.5, dual 6.5, the 906 LA, and the dual 10-inch, the 910 LA. Yeah. So these are the 2 line arrays.
these are using composite cabinets. So these are not using timber, these are using composite construction. So this is, like, let's call it plastic, but it's composite material. So this is very efficient and lightweight, but we did a lot of design on making sure it's still rigid enough, strong enough to be able to fly many boxes. Okay. Took a lot of design. And then the two subwoofers are single and a dual 18-inch. Yes. So obviously the 6.5 inches. So the thing about the system is it's very scalable. So for both systems we can ground stack or fly. For the 906 you can also pole mount on top of the subwoofer. So you could cover 10 to 20 people, or you could fly 16 boxes each left and right and be covering many thousands of people in a festival. So approximately 2,000 people. Yeah, a few thousand people. And look, obviously depends on the size of the system, the venue and things. This is very scalable. So today you could be doing a small conference, tomorrow you could be doing a music festival, right? Okay. Same system. So these are basically non-powered. No, these are self-powered. So the other thing about active, so the other thing is in the back here we have amplifier modules in every single speaker. So in the back here we have a full control panel with a menu. We have network connections for control and monitoring. We have analog inputs. So this amplifier is of class H, class D, what? Yeah, this is a dedicated amplifier for the SRX range. It's a brand new model. We have IP rated power cons here on the side. So each speaker is self-powered and active with its own DSP inside. So all the speaker presets, the speaker processing, the crossovers are all built into the speaker itself. So that gives an immense amount of control and monitoring capabilities. Now, like I say, you can configure the speaker on panel or by connecting to the network cord. There's a very advanced piece of software we're launching called JBL Performance, which gives real-time monitoring and control of the system from a laptop or an iPad. So what is the SPL generated by this one and this one? Yeah, so that's a good question. So the small 906 LA has a max SPL of 134 dB. That's too high. Yes, very high. And then the 910 LA, the dual 10-inch, is 135 max SPL dB. Okay. Then the subwoofers, especially the dual, the 928S, that's got a 140 dB max SPL. 140 dB for the dual, the 928. Over here. So yeah, it will not match. So we are talking about SPL only. Having dedicated JBL speakers and JBL amplifier, that's perfectly matched. So extremely efficient. Yeah. These are also powered. Yes, everything is self-powered. They all run on the same amplifier topology and they're all running on the same network and the same software. So you have lowered the customer confusion about the amplifiers or matching things. Yes, so there's no confusion. It's built in. You don't need to be concerned. And also there are presets you think. Absolutely. So built-in JBL tune presets for optimal performance and reliability. So we've also got limiters built into these amplifiers, so it's very difficult to overload. Okay. So these are newly launched in India. Yeah, so this is the public launch in India. The global launch was recently at ISE in Barcelona, and then we're only a few weeks after that launching this here today in India at the Palm Show. And then these will be shipping in the coming months here in India. Okay. So great thing. तो आप लोगों ने देखा कि JBL ने हमारे लाइव सिस्टम को इंडोर या आउटडोर को भी एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से विदाउट एम्पलीफायर्स एक्टिव वन इन्हें रिप्लेस करने की कोशिश की है लाइट वेट से और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस के साथ। SPL भी इसमें 134, 135 तो SPL भी कमाल का परफॉर्म करेगा अभी। और ऐसे और प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग और बात करते हैं रॉडनी से फ्रॉम JBL प्रोफेशनल। Tell me something about what amount of line arrays and subwoofers should be used on around 4,000 people. Yeah, so obviously, so maybe let me start. So if you're indoors, you want to do a small ground stack system, you could put 2 subwoofers. On top of that, you put 4 speakers of the 910, and that's a ground stack, left and right. 4 speakers, 2 subs. That's a nice little system. You go outdoors, you could be putting up to, let's say, 8 subwoofers left and right if you wanted a big show, and then flying up to 16 of these 910s in a single hang. So a total of 32 speakers. 16 left, 16 right, for a full-size outdoor system. So it scales from very small to very big. So in short, I will be covering around 300 meters of area. Yeah, so look, and again,
I wouldn't be caught up in the we've got a lot of software that'll model that, yeah, but look, it'll cover a big area for that size system, right? So obviously every time it's going to depend on the environment, on the venue, on the environment, the weather, the humidity, all of these things, and the software will tell you that. So you can really get a lot of detail in terms of making sure you're putting the number of boxes in the air that you need. Not too many, not too less. Yeah. So in short, it's a very simple configuration. Without using amplifiers, you have to just put it on the liner edge and you are ready to go. It's plug and play system, you can call it. Yeah, so that also means if you're going to go to a show, you don't have to think about how many amps to take, how many speakers. Everything's already on board. You just take the number of speakers you need and take it and go. Yeah, that's a great thing. तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है? होप करता हूं कि हमारा ये पैटर्न बाकी सभी से चेंज्ड है। ये वीडियो दिखाने का तरीका थोड़ा सा चेंज्ड है। ये क्यों है? क्योंकि अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्टडीड मटेरियल मैं ना बताऊं तो फिर मेरे वीडियो बनाने का मीनिंग क्या होता है? क्या है कि हम लोग ट्रस्ट में बिलीव करते हैं और ये ट्रस्ट तभी बनता है जब आप लोगों के लिए मैं स्टडी करूंगा और रिसर्च करके मटेरियल ढूंढ के लाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज के JBL के प्रोडक्ट्स कैसे लगे हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। प्राइस के बारे में एक पॉइंट बता देता हूं क्योंकि कंपनी ने इन चीज़ों का प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं किया है। जिस दिन ये डिसाइड करेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका प्राइस डाल दूंगा। तो जो लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हैं ये मैसेज उन तक पहुंच गया होगा। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।